as you have mentioned, that gamma decay is possible only after either alpha or beta decay. So your nucleus, after emitting alpha or beta decay, they are not actually in ground state. They are in excited state, and they are basically coming to ground state by the emission of gamma decay. So suppose if I represent a symbol, you have a two state. So after emission of alpha or beta decay, you have a daughter nuclei. Daughter nuclei, and let us assume atomic number of daughter nuclei is Z and mass number is A. And it is not in ground state, it is in excited state. So I'll represent E0 is the ground state and E1 is the excited state. Okay. Now this nuclei will come from this excited state to ground state by the emission of a high energetic photon, and that will be called your gamma ray. Because gamma ray is nothing but electromagnetic wave having very high energy, right? You say, if I tell you that if you have a electromagnetic wave, right, it contains many part of wavelength, right? If I tell you that complete EM wave spectrum, EM spectrum, it will be like a Rami Lux G. Rami Lux G. What it means? You have a radio, this is the complete your EM wave or EM spectrum. Ra means radio. Then you have a audio, then you have a microwave, then infrared, then L means visible, U means ultraviolet, X-ray means X-ray, G means gamma ray. So this is the complete EM spectrum or electromagnetic spectrum, and gamma ray is having highest energy or frequency among all these part of EM spectrum. So if I give that arrow, the energy will be going to increase. Energy or frequency is going to increase if you go from left hand side to right hand side, and wavelength is going to increase in this direction in the EM spectrum. Again, I am repeating, you have a complete EM spectrum for electromagnetic wave, radio, audio. Rami Lux G. Radio, audio, microwave, infrared, L means visible, U means ultraviolet, X means X-ray, G means gamma ray. So energy among all this EM spectrum, energy will be least for radio wave, and energy or frequency will be highest for gamma ray. Okay, in terms of wavelength, wavelength will be highest for radio wave and it will be least for gamma ray. So what I'm trying to say, there will be emission of photon when that your nucleus is coming from excited state to ground state. There will be emission of photon, and that photon carries a high energy or frequency, and that will be called gamma ray. That will be called gamma ray. ठीक है ना? That will be called gamma ray. ठीक है? Parampreet, Satish sir was asking, you have some doubt. Can you please tell me what the doubt you have? No, sir, I was asking कि आप कह रहे थे कि वो हमारा ये गामा रे चैप्टर खत्म होने के बाद कोर्स खत्म हो जाएगा, तो शेल मॉडल का पूछ रही थी मैं, वो मतलब कि मुझे लगा कि मेरा छूट चुका है, ऐसे मैंने इसलिए पूछा था, लेकिन मैंने कहा कि अभी हुआ नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या था आपका, there is a student from JAM, and there is a common syllabus for both, है ना? तो उसको मैंने पहले फिनिश किया। जैसे आपका आज गामा रे खत्म हो जाएगी, कल से आपका वो मॉडल शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? ओके सर, ठीक है,
So this is your part. Now what I'm saying, now can you tell me what will be the Q value for this decay process? So you see, initially when your nucleus is at excited state, it is at rest. Now when it is coming from excited state to ground state, there will be emission of photon. So it is at rest. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? It is at rest, है ना? So linear momentum of this nuclei when it is at ion, linear momentum इसका कितना हो जाएगी? Obviously it will be zero because it is at rest. V is zero, so linear momentum will be zero. Now when it is coming to ground state, and if I write the decay process, exactly what is happening, then it will be understandable. So when it is coming to ground state, then your nucleus will be represented as XZA. So sorry, that will be your OIZA. So you have a parent nucleus excited, not parent actually, daughter nuclei at excited state. It is coming to ground state by the emission of photon, and I am representing that symbol YZA. यहाँ पे star. So if I write the decay process, then what I'll write? You have a YZA star is going to YZA plus gamma, right? Now this is at rest. This is at rest, so linear momentum will be zero. And for any decay or interaction, that linear momentum will be conserved. If I write P, the P should be conserved, right? And I'll assume that linear momentum. So before decay, that linear momentum is zero because it is at rest at ion. Now I'll assume that linear momentum of daughter at ground state, that will be PD plus, इसका मोमेंटम कितना होती है? लिनियर मोमेंटम फोटोन का कितना होती है? Anyone in the class? Anyway, I'll write that symbol, then I'll tell you. So this will be the, pattern of linear momentum. Before decay, the linear momentum is zero, and I'm assuming that linear momentum corresponding to daughter nuclei at ground state, that is PD, and for photon or gamma photon, it is P gamma. It means what is I can write that P gamma, that will be equal to minus PD. So as you know that when a gamma photon is emitting, it will have some linear momentum. So for photon, what I will write, that for photon, you know that E equals to क्या होती है? PC होती है, right? Because the rest mass of photon is zero. ठीक है ना? And gamma is nothing but a photon. Gamma is nothing but a photon. So for gamma, what I'll write, that E gamma equals to P gamma into C. It means for photon or for gamma photon, that momentum or linear momentum, basically it will be how much? कितना हो जाएगी? E gamma by C हो जाएगी. ठीक है? So this is the magnitude. ठीक है ना? P gamma, the linear momentum, magnitude of linear momentum will be energy. Gamma photon का energy तो non-zero होती है. So obviously linear momentum of gamma photon will be non-zero, and that value will be E gamma, energy of gamma photon divided by C. So what I am trying to say, from this equation, I can see if your gamma particle is moving in this direction, so parent daughter nuclei here is at rest. But when it is coming to ground state by the emission of gamma photon, I'm assuming if the gamma photon is moving in this direction, then your daughter nuclei will be moved, or there will be recoil speed of daughter nuclei in the opposite direction. From this equation, I can say. Right, student? Is it? Are you following me? What I'm trying to say? Yes, sir. Sir, at the end of that right side, what you have written, that is not visible. Sir, visible नहीं है वहाँ पे. And then this part. This part. Yes, sir. So you tell me, for photon,
You know that relativistic energy क्या होती है? If I'm correct, it is nothing but P square C square plus M naught square C for 4, right? And for photon, rest mass of photon is 0, right? So for photon, E cos to क्या होती है? PC होती है. And gamma is also a photon. Gamma is nothing but a photon, right? So for gamma, what I'll write that E gamma, energy of gamma ray, that will be the linear momentum of gamma ray into C. So it means P gamma, linear momentum of gamma ray, that will be E gamma by C. E gamma by C, right? So what I'm telling, फिर बाकी सारे तो डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, right? Tell me if you have any doubt further. No. Okay. ठीक है ना? So it is at excited state, your daughter nuclei at rest. However, when it is coming to ground state, to preserve that linear momentum, if the gamma photon is moving in this direction, your daughter nuclear has to move in the opposite direction, and there will be having some recoil speed here. Okay. सर गामा डे इमीडिएटली अल्फा या बीटा डीके के बाद होता है? नहीं, इमीडिएटली तो नहीं होती है. थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन मतलब इमीडिएटली, आई मीन not exactly immediately, there will be some time interval. ओके सर. Don't worry, I'll tell that story also, because when I'll discuss that Bohr and Wheeler theory, and then I'll discuss what will be the time interval after beta decay or gamma decay. What will be the time interval between them? यस सर, एक्चुअली डाउट इसलिए. I understood what you are trying to say. यस Because I understood. That time it will be clear, but there will be some time interval. ओके सर. ठीक है ना? Okay, now can you tell me what will be the energy emitted or Q value for this gamma decay? What will be the Q value? So that Q value I can write the kinetic energy of product. Again, what I'll use the kinetic energy of product. Kinetic energy of product minus kinetic energy of a reactant. यहाँ पे reactant का मतलब क्या हुआ? What is the reactant here? डॉटर न्यूक्लियर. Always you have to think that process. You have a OIZA star goes to OIZA plus gamma. So reactant matlab your daughter nuclei is at excited state. This will be the reactant. है ना? लेफ्ट हैंड साइड में जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट. तो स्टार का मतलब क्या है? यू हैव अ डॉटर न्यूक्लियाई एट एक्साइटेड स्टेट, दैट विल बी द रिएक्टेंट. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट? So I'll use that P daughter का square divided by twice mass of daughter, because kinetic energy is nothing but what? P square by twice m. And I'll assume that linear momentum associated with daughter at ground state, that is PD. So PD square by twice mass of daughter. And then you will have kinetic energy of your gamma particle, and that will be how much? That will be E gamma. That will be E gamma. And kinetic energy of the reactant is how much? 0. Exactly. So it will be 0. Now if you remember, just we have written कि जो आपका P gamma होती है, that is nothing but minus PD होती है. इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ PD होगी, that will be same as P gamma. और P gamma कितना होती है? P gamma by C. Right?
ई गामा बाई सी होती है। सर ये पी डी है नीचे सब कौन सा? जो अभी लिखी है इक्वेशन पी। ये वाला? हाँ जी सर। हाँ, पीडी। अभी हम लोगों ने देखा था कि लीनियर मोमेंटम से हम क्या देखा था कि जो आपका पीडी होती है दैट इज माइनस पी गामा, राइट? वी हैव सीन दैट, है ना? फ्रॉम हाँ लीनियर जी मोमेंटम कंजर्वेशन वी हैव सीन, from linear momentum conservation we have seen that linear momentum of daughter at ground state will be in the opposite direction as emitted photon. It means if I take magnitude both side, if I take magnitude, then I have to remove that vector sign, right? So their magnitude will be same. Magnitude means modulus, है ना? इसका absolute values. It means जो linear momentum of daughter, magnitude of linear momentum of daughter will be how much? That will be p gamma, and p gamma कितना होती है? That is nothing but e gamma by c होती है, ठीक है? So just in place of pd I can substitute e gamma by c. So if you do that, here you will get that q value, that will be e gamma का square divided by twice md into c square, ठीक है ना? And you will have e gamma. So basically if you know that daughter nucleus and energy of emitted photon, then you can calculate the q value in gamma decay. I can see that q value in gamma decay depends upon mass of daughter nuclei and only the energy of emitted photon or gamma particle, ठीक है ना? Let us solve a problem quickly. So suppose you have a gamma decay process is given, beryllium, basically you have a atomic number 56 and mass number 137. It is at excited state, it is going to ground state 56 137 by the emission of gamma particle, and energy of emitted gamma particle or photon is given, that is 662 kilo electron volt, that is 662 kilo electron volt. So you have a gamma decay process is given and energy of emitted gamma particle is given, that is 662 kilo electron volt. Okay, so what you have to calculate? You have to calculate that energy release in this process will be how much, or Q value basically. Energy release in this process will be how much, or Q value कितना होगी? Can you do? Is it possible to do? Okay, so that nothing is there. If you remember, gamma decay में क्या होती है? The Q value is nothing but E gamma का square divided by twice MD into C squared plus E gamma का square. Right? Now if you solve it, you have a E gamma कितना given है? 662 kilo electron volt. So I can write 662 into 10 the power 3 का square. E gamma will be how much? 662 into 10 the power 3 का square, right? And then you will have what? Twice mass of daughter कितना आ जाएगा यहाँ पे? बताओ, mass of daughter कितना आ जाएगा? I will calculate that mass of daughter. So as you know, if you know the mass number, then I can say that total mass will be approximately, mass of this daughter will be approximately 137 times mass of a proton. Because mass of a neutron is almost same as mass of a proton. ठीक है? So आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है? 137 है. हर एक का मास कितना है? mp है. तो टोटल जो न्यूक्लियस का मास होगी
and that will be the mass of daughter nucleus, that will be 137 times mass of a proton, or you can take mass of a neutron. ठीक है ना? Is this clear, student, what I'm saying? Yes, sir. Now if you substitute it, you will have 137, and you know that mass of a proton कितना होती है? 938.28 mega electron volt, right? Mega electron volt means what? 10 the power 6 electron volt per c square, right? And यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक c square है, ठीक है ना? और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन सॉरी यूनिट जो थी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे ई गामा का स्क्वायर था 10 the power 3, so इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर, एंड देन यू हैव 662 into 10 the power 3 electron volt. So on electron volt will be cancelled, right? So this unit will become electron volt, and c square will be cancelled. ठीक है ना? So you'll have at the end, you will have that unit that will be in electron volt. Okay, so nothing is there, just you have to substitute that energy values. I've substituted in terms of electron volt, and I've substituted that mass of daughter, that is nothing but mass number times mass of a proton or neutron, and just have convert that unit from mega electron volt to electron volt. Okay, and you have a here kilo electron volt to electron volt. If you do that, you'll basically get that energy value that is around 1.7 electron volt. Okay. Sir, हाँ जी, so one small thing, sir, that mass of daughter is 135 into mass of proton. हाँ जी, mass of daughter is 137 into mass of proton. हाँ, So 137 is atomic mass. no, 137 is not atomic mass, it's a mass number. Mass number. So sir, Hmm. it is the only mass, then why we are doing daughter? हाँ जी, मास ऑफ डॉटर नंबर, आपका मास टोटल डॉटर का कितना होगा बताओ, कितना न्यूक्लियन है हर एक का, कितना न्यूक्लियन है फर्स्ट ऑफ ऑल? जितने प्रोटॉन्स होंगे सर उतने ही न्यूक्लियॉन्स होंगे. नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ पे देखो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 56. और न्यूट्रॉन कितना होगी? 137 minus 56. 137 माइनस, हर एक का मास कितना है? मैंने अज्यूम किया हर एक का जो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि आपको जो यूनिट यहाँ पे जो एनर्जी वैल्यू गिवन रहेगी, दैट विल बी आई मीन नॉट उतना ये नहीं गिवन रहेगा कि 1.7 1.77 लाइक दैट, है ना? आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करोगे आप, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को आप एक्यूरेटली सेम मान सकते हो, क्योंकि उतना डिफरेंस भी नहीं होती है, 938.28 होती है और 939.57 होती है ना, उतना भी डिफरेंस नहीं होती है, ठीक है? सो यू कैन एज्यूम दैट मास ऑफ अ प्रोटॉन इक्वल्स टू मास ऑफ अ न्यूट्रॉन. इफ यू वांट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट, है ना, आप डिपेंड करेगी, जैसे आपका एग्जाम में क्या, एग्जाम में कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आपको मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेट करनी है. अगर ऑप्शन में गिवन रहेगी 1.7, दूसरे में 2.7, तीसरे में 4, इस तरह की गिवन रहेगा, है ना? तो आप क्या करोगे, अप्रोक्सीमेटली सेम लेके कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, उतना फर्क नहीं आएगी आपका. Okay sir. इफ यू वांट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट, देन हाउ विल डू z into mp plus a minus z into mn, है ना? थोड़ा बहुत फर्क आएंगे उसमें, ज्यादा फर्क नहीं, ठीक है ना? But how I am doing here, because in the exam it will be very simple, right? 137 into mp, if you do that, ठीक है ना? Okay. So now it's a scenario, but why that gamma decay is happening? Yes, it's fine that there is a nucleus will be in excited state and there will be emission of gamma particle. But why it is happening? So what is the reason? Gamma decay क्या है actually? Gamma क्या है actually? Just we have discussed. What is gamma actually? What is gamma? EM particle. EM wave. EM wave. EM wave or photon.
So EM wave or photon. Now, can you tell me what is the origin behind creation of EM wave? You have learned this thing in electromagnetic wave, right? What is the reason behind creation of EM wave? No? Anyone in the class? What is the reason behind creation of EM wave? The transition between Haji? the transition between energy. Transition, that's not perfect answer. Why there is a transition? First of all, tell me. When alpha or beta rays are emitted, then the nucleus is remain in the excited state. Ah. It emits the energy to come in ground state, Why it is in and that excited? energy is released in the form of gamma rays. How it is in excited state? I don't know. No, I'll ask you. Tell me. You have learned this thing, right, in EM theory, that why there is a, you know, that static charge will create what? Static charge क्या create करती है? Electric field. Electrostatic. Electrostatic field. I mean that electric field will not be varying with time. Uniform motion जब होती है चार्ज का क्या create करती है? Magnetic. Magnetostatic, static magnetic. Magnetic field बोलोगे तो करेक्ट आंसर नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड तो टाइम वेरिंग भी हो सकती है ना. Yes, sir. जब हाँ चार्ज स्टेशनरी है दैट विल क्रिएट टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. जब आपका चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है देन इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड और दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन टाइम. आई कैन से दैट इज स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड. बट व्हेन a charged particle oscillate or accelerate, है ना, when a charged particle is accelerate or oscillate, then it will create electromagnetic wave. And in electromagnetic wave you have electric field and magnetic field, both are actually time varying. So you have to keep in, I mean it's a basic thing. I don't know why people don't understand this thing, and you have to keep in this thing now. Why you don't know this? That you have a, when a charged particle is stationary, that will create time independent electric field. When it is moving in uniform velocity, it will create time independent magnetic field. When a charged particle is accelerated or oscillate, it will create time varying electric field and magnetic field at the same time. At the same time, it will create time varying electric field and magnetic field, and both will be perpendicular to each other. And there will be creation of EM wave or photon, and the propagation of EM wave will be perpendicular to both electric field and magnetic field. And that is the first front page of Griffith book. Understood? Is this clear, student? Yes, sir. Everyone clear? No? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we have a gamma decay. It is also EM wave. So what is the reason behind creation of gamma decay? Because you know that inside proton, inside nucleus, as you have discussed in the nuclear force, inside nucleus you have a nuclear force, and the reason behind nuclear force is like proton is converting to neutron by the exchange of pi plus, or neutron is converting to proton by the exchange of pi minus. Na? This thing we have discussed in nuclear force, right? Yes, sir. So it means what? Inside nucleus, charge is actually not fixed. It is converting to, when the proton is converting to neutron or neutron is converting to proton, charge is actually time varying. Inside nucleus, charge is time varying because of nuclear force or exchange force. I can see now proton is converting to neutron inside nucleus, or neutron is converting to proton. So you have a time varying charge inside nucleus. So in according to classical EMT theory, the time varying charge, you can mention this also. According to classical EMT theory, according to classical EMT theory,
The time varying charge can be represented as represented as time varying electric multipole. So what you said? Time varying electric? Multiple आपने पढ़ा होगा ना, dipole, quadrupole, octapole. Yes, sir. So time varying charge, electric charge can be represented as time varying के bracket में भी लिख सकते हो oscillating multipole. You have to always keep in mind, whenever you have a time varying charge, according to classical EMT theory, the time varying charge can be represented as time varying bracket में oscillating multiple. And oscillating multiple means what? You have a dipole oscillation. You have a electric dipole, you can mention, like you have a electric. Be careful here, huh? This is interesting. Electric dipole oscillation. Electric dipole oscillation. Then you have a electric quadrupole oscillation. You have a electric quadrupole oscillation, electric octapole oscillation, so on. और आपको पता है कि जब डाइपोल का ऑसिलेट होती है क्या होती है? When there is a oscillation of dipole, what will happen? No. आप लोगों का EMT खत्म हो गया कि नहीं? Please give me answer ना please. आप लोगों का EMT कोर्स हो गया? Yes, sir. No, sir. नहीं हुआ, अच्छा. Okay. Then sorry, because then how will understand? I thought that that EMT part is finished. Okay, so when there is a dipole, electric dipole oscillation, then it will be created radiation. Dipole nahi, electric dipole, quadrupole, octapole, and so on. That oscillation, each pole oscillation will create radiation or EM wave. है ना? So that radiation I'll call electric multiple radiation. है ना? That I'll call electric multiple radiation. So first of all, whenever you have a time varying charge is creating inside nucleus because of exchange force. That proton is not fixed, it is converting to neutron, neutron is converting to proton. So there is a time varying charge, and that you can represent as a multiple time varying or oscillating electric field. And that oscillating multipole, each oscillating multipole will create gamma ray or EM radiation. Okay, the first cause. And this is called that electric cause of gamma radiation. This is called, you can mention, this is called electric cause of gamma radiation. Should be called electric cause of gamma radiation. Similarly, there will be a time varying current inside nucleus. Time varying current inside nucleus. Why? Because you know, when you have a proton is having orbital motion inside nucleus, it will produce current loop. This is the proton case. The orbital motion of proton will create current loop, right? And suppose you have some neutron. Now, when a proton is converting to neutron by the exchange of pi plus, there will be no current, right? There will be no current. As you have discussed, that each proton and neutron inside nucleus is having orbital motion, and proton or the orbital motion of proton will create current loop because proton is charged particle. But this proton is not fixed. It is converting to neutron. When it is converting to neutron, there is no current in the loop. So current inside nucleus is actually not fixed.
current inside nucleus is not fixed, or I can say there is a time varying current inside nucleus. There is a time varying current inside nucleus, and the time varying current you can represent as time varying or oscillating magnetic multipole. Sir, last Haji. part, can you just repeat, sir? So inside we have discussed that, right, that inside nucleus each nucleon is having orbital motion. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now suppose you have proton. The orbital motion of proton will create current. Yes, Inside sir. nucleus, it will create Yes, current. sir. Yes, sir. Now this proton is not fixed. Yes, sir. When it is converting to neutron, so this current will be, अब कितना हो जाएगा, जैसे कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में कितना हो गया करंट, 0. तो अब न्यूट्रॉन फिर फर्दर क्या हो जाएगी, प्रोटॉन में कन्वर्ट होगी, तो फिक्स नहीं है ना, Yes, sir. हो रहा है, तो करंट क्या हो रहा है इनसाइड न्यूक्लियस, जैसे टाइम वेरिंग, Oh, okay, sir. टाइम वेरिंग करंट और फ्लक्चुएटिंग करंट न्यूक्लियस से, फ्लक्चुएटिंग करंट इनसाइड न्यूक्लियस. Okay, sir. Why? Because of there is a exchange. Always there is a exchange of proton to neutron, neutron to proton, neutron to neutron, proton to proton, and so on. So that causes there is a time varying current, and that time varying current you can represent as time varying or oscillating magnetic multipole. And each multipole or each pole of magnetic oscillation will create EM radiation. Is this clear? Sir, Haji? magnetic multipole. A magnetic dipole, magnetic quadrupole, and so on. आपको पता है ना, मैग्नेटिक मोनोपोल जो है एग्जिस्ट नहीं करती है ना, डाइपोल एग्जिस्ट करती है, राइट? मल्टीपल एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा हो ना. So before this we have. हाँ जी. सर ये वही कॉज है ना, गामा रे का आप बता रहे हो कि हाँ जी वो ऑसिलेटिंग मल्टीपोल है, तो वो दैट इमिट्स द रेडिएशन. मल्टीपल मल्टीपल मतलब क्या है, यहाँ मल्टीपल में क्या होती है, डाइपोल होती है ना, जैसे आप मल्टीपल एक्सपेंशन आपने पढ़ा हो. हाँ सर बिफोर वी हैव डन दैट इलेक्ट्रिक दैट मल्टीपोल ना. इलेक्ट्रिक मल्टीपल आप लोगों ने पढ़ा हो इलेक्ट्रोस्टैट में. यस सर. मैग्नेटिक वाला नहीं पढ़े वो. नहीं सर, मैग्नेटिक पार्ट चल रहा है अभी. अच्छा, you can read that. You can expand. Multiple expansion means you can represent like monopole, dipole, quadrupole, octapole, hexapole. My question is, अब जो गामा रे का जो कॉज है, that जो रेडिएशन इमिशन ऑफ गामा रे है, that is due to both electric multipole and the magnetic multipole. Both. Okay sir. Okay. Sir, one question, sir. We know, sir, dipole तो दिख रहा है कैसे हो रहा है, पर सर quadrupole, octopole ये सब कैसे हो जा रहा है सर इसमें? अच्छा, ये विजिबल करना काफी टफ है ना, बट वो आपका उसके लिए क्या है, आपको टेंसर में जाना पड़ेगा, टेंसर एनालिसिस में जाना पड़ेगा. ठीक है सर, आई मीन जैसे आपका क्वाड्रुपोल कैसे बनते हैं बताओ, क्वाड्रुपोल कैसे बनते हैं बताओ, एनीवन? If I give simple example, how that quadrupole will make? Pardon sir? हाँ जी. Sir, एक बार फिर से मैं How that mute हो गया था. quadrupole will be formed? Tell me. So quadrupole में सर चार चार्जेस होते हैं. डाइपोल से बनता है, जब दो Yes, sir, डाइपोल, दो डाइपोल जब अपोजिट पोलैरिटी में होती है उसको आप क्वाड्रुपोल कहोगे, है ना. yes sir. बेसिकली वो मैं एग्जांपल जैसे मैं थोड़ा सिंपल आपको बताता हूँ, जैसे क्वाड्रुपोल कब होती है आपका, जब स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होती चार्ज, जैसे जब न्यूक्लियस आपका स्फेरिकल शेप नहीं होती है, देन हैव क्वाड्रुपोल, है ना. बट उतना विजुअलाइजेशन में आपको अभी जाना नहीं पड़ेगा, है ना, because you have to finish that part and you will go when you will go to that research. If you understood whatever I taught you na, if you have understood this much, it will be more than sufficient. और इतना डिटेल्स वे में विजुअलाइज करके nobody can read taught you that nuclear physics, है ना, कैसे बनती है that you imagine. आपको समझ में आई, मैं जो कॉज बताया आपको समझ में आई? एवरीवन टेल मी. Yes sir. समझ में आया ना, सबको समझ में आई कि क्या Yes, कॉज? Yes. दो कॉज होती है आपका, एक इलेक्ट्रिक कॉज बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मल्टीपोल,
like dipole, quadrupole, octapole, hexapole, and magnetic dipole, quadrupole, hexapole, सबका जो ऑसिलेशन के कारण आपका क्या बनती है, गामा रे। तो दोनों ही कॉज होती है, एक कॉज नहीं होती है, साइमल्टेनियसली होती है। ठीक है, now you have a, suppose again I'm drawing at some picture, you have a two levels E1, E0. ठीक है, you have a daughter at excited state. और जब इस स्टेट पे है, सपोज इसका मैं डिफाइन कर रहा हूँ, स्पिन डिफाइन कर रहा हूँ JI एंड पैरिटी पाई I. ठीक है, now when it is coming to ground state, when it is coming to ground state, and I can represent like JOI ZA, इसका स्पिन JF और पैरिटी phi F. ठीक है, there will be emission of photon, एंड इस फोटोन का जो मैं एंगुलर मोमेंटम एज्यूम कर रहा हूँ, L एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है ना, and corresponding parity of this photon or gamma particle that I have assumed pi. तो पाई कितना हो जाएगी, टेल मी, पाई कितनी होनी चाहिए बताओ? नो, okay, I'll tell you that, you know, how to the pi value. So you have to keep in mind what I have assumed, that you have a nucleus at excited state and ground state, and when it is at excited state, spin is JI and parity is pi I. At the final state, spin is JF, parity is pi F, and is emitting photon, angular momentum of this photon or gamma particle, that is L, and pi is the parity of this gamma particle. Okay, now that L, if I apply that angular momentum conservation, what I'll say, that JI will be equals to JF plus L. ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, L जो होगी क्या होगी, that will be JI minus JF. ठीक है ना, it means that L, magnitude of angular momentum carried out by gamma photon, will be greater than equals to mod of JI minus JF or less than equals to mod of JI minus JF. Mod of JI minus JF to this will be the angular momentum. This is the angular momentum of Sir. emitted. हाँ जी, तो JI plus JF होगा। हाँ JI plus JF, कौन सा ये वाला? हाँ, it will be JI plus JF. Very good, thank you. ठीक है ना, okay. Now as you have discussed that gamma ray का cause क्या क्या होती है, दो causes होती है, right? Electric and magnetic. Now we'll discuss one by one. So you understood that allowed values of angular momentum of photon or gamma photon, that will be how much, mod of JI minus JF to JI plus JF, है ना, and JI and JF is the angular momentum or spin of daughter nuclei at excited state and ground state respectively. Now you have an electric multiple, you have an electric multiple, है ना, I'll define that is EL, and you have a magnetic multiple, you have a magnetic multiple, and that I'll define ML. ठीक है ना, you have electric multiple and magnetic multiple. इलेक्ट्रिक मल्टीपल के लिए जो पैरिटी डिफाइन करते हैं हम इमिटेड फोटोन का, दैट इज लाइक -1/L, और मैग्नेटिक मल्टीपल के लिए हम डिफाइन करते हैं इमिटेड फोटोन का, दैट इज -1/L + 1. ठीक है,
So this is the parity of photon for electric cause. This is the parity of photon for or gamma photon for magnetic cause. Now can I write, as you have seen, that you have a initial state parity of daughter, that is pi I, and final state में क्या है pi f into pi, because initially आपका reactant में क्या है आपका daughter nuclei at rest, उसका जो parity हमने define किया pi I define किया, daughter state daughter nuclei at ground state that we have defined pi f, and pi is the parity of photon. So as we know that parity is multiplicative in nature. So what I can say that parity of daughter at excited state that will be equal to ground state, that is pi f into parity of photon. ठीक है ना. अब देखो फॉर इलेक्ट्रिक कॉज के लिए हमारा पैरिटी ऑफ फोटोन कितनी होती है -1 की पावर l. सो आई विल राइट पाई i इक्वल्स टू पाई f into -1 की पावर l. है ना. नाउ if you have like l equals to on 2 3 and sorry on 3 and all odd number, तो फिर क्या हो जाएगी आपका बताओ. pi I is equal to minus pi s. नेगेटिव. हाँ पाई i इक्वल्स टू माइनस पाई. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका डॉटर न्यूक्लियस का पैरिटी का चेंज हो रहा है, जब डॉटर न्यूक्लियस का सॉरी डॉटर का पैरिटी का चेंज हो रहा है, व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, इफ देयर इज अ चेंज इन पैरिटी पाई i इक्वल्स टू माइनस पाई f. इसका मतलब क्या हुआ है कि इन दोनों का पैरिटी का क्या है चेंज हुआ है. इफ इट इज माइनस देन इट विल बी प्लस. समझ लो ना. और इफ इट इज प्लस देन इट विल बी हाउ मच, इट विल बी माइनस. भाई समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ. सपोज मान लो अगर पैरिटी जो है डॉटर न्यूक्लियस का एक्साइटेड स्टेट में सपोज मान लो प्लस भी मतलब पॉजिटिव है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगी, सॉरी ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी. और इफ इट इज नेगेटिव इट विल बी पॉजिटिव. इसका मतलब क्या हुआ है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन पैरिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस in the excited state and ground state, when there is a change in the parity of daughter nucleus in the excited state and ground state, then what will happen, the allowed values of l that will be so that will be on 3 5 and so on. ठीक है ना. So angular L will be always odd. हाँ जी. L will be always odd. नहीं अगर l if यहाँ पे if l equals to this Then pi this I equals function. to then pi I equals to minus pi f. Okay sir. और I can say अगर पैरिटी का चेंज है डॉटर का एक्साइटेड स्टेट में एंड ग्राउंड स्टेट में, अगर डॉटर का पैरिटी का चेंज है देन अलाउड वैल्यूज ऑफ एल विल बी ऑन 3 5 एंड सो ऑन फॉर व्हाट, फॉर इलेक्ट्रिक पोल. तो देखो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो में गामा रे इमिट हो रहा है दोनों कॉज के लिए इमिट हो रहा है राइट एट द सेम टाइम, इलेक्ट्रिक कॉज एंड मैग्नेटिक कॉज. बट ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रिक पोल अलाउड हो गई एक ही टाइम में. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गामा रे इमिट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डाइपोल भी ऑसिलेट हो रहा है एक ही टाइम, क्वाड्रोपोल भी एक ही टाइम ऑसिलेट हो रहा है. एग्जाम्पल सारे पोल एक टाइम ऑसिलेट नहीं हो रहा है. कौन कौन सा पोल के कारण गामा रे इमिट होगी दैट विल डिफाइन बाय चेंज इन पैरिटी. अगर पैरिटी का चेंज है इसका मतलब अलाउड वैल्यूज ऑफ एल विल बी on 3 5. So electric cause of gamma ray radiation for this type of nucleus will be E1 E3 E5 and so on. सर प्लीज रिपीट कर दो E1 E3. हाँ देखो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर दोनों का पैरिटी का चेंज है ना,
देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मल्टीपल हमने कैसे डिफाइन किया, EL से डिफाइन किया, E सबस्क्रिप्ट L, है ना। और पाई जो है, पैरिटी जो है फोटोन का -1⁴L फॉर इलेक्ट्रिक मल्टीपल, ठीक है। अब जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों का अगर पैरिटी का चेंज है, मतलब डॉटर का एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में पैरिटी का चेंज है, इसका मतलब जो L अलाउड है corresponding to electric multiple that will be on 3, 5 and so on. This will be the allowed values. कब? जब आपका पैरिटी का चेंज है एक्साइटेड स्टेट में एंड ग्राउंड स्टेट। तो कौन कौन सा वैल्यू अलाउड होगी? ऑन, L इक्वल्स टू ऑन, 3, 5 एंड सो ऑन। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक पोल होगी दैट विल बी E ऑन, E3, E5 एंड सो ऑन। तो जो So- गामा रे इमिट हो रही है, जो गामा रे इमिट हो रहा है इन केस के लिए, तो उनके लिए रीजन क्या है? ऑसिलेशन ऑफ इऑन। इऑन का मतलब क्या है? इऑन का मतलब क्या है? सर मोनोपोल। नो, इऑन का मोनोपोल नहीं होती गामा में। इऑन का मतलब है ये आपका डाइपोल है। ये क्या है? एक Quadrupole. क्वाड्रुपोल। नो, ये 2 क्वाड्रुपोल होती है ना, ऑक्टोपोल। ऑक्टापोल, ठीक है ना, इस तरह की है। सर हाँ सर जी, जब हम पैरिटी मतलब डिफाइन करते हैं, ये -1 रेज्ड पर L जो है वो एंगुलर मोमेंटम नहीं था? -1⁴L। L क्या है आपका यहाँ पे? यहाँ पे तो सर जैसे आप बता रहे हो ये तो ये पोल्स का आ गया ना, पोलैरिटी मल्टीपोल है या फिर ये डाइपोल। आपका एंगुलर, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है इसका, आपका गामा फोटोन का टोटल एंगुलर मोमेंटम। सर फिर ये पोल को कैसे जब बता रहा है सर, ये चीज नहीं आ रही। कौन सा? ये पोल? हमने L इक्वल टू 1, 3 किया, हमने कहा कि ऑड के लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो रहा है ना। देखो यहाँ से आप बताओ, पाई आई इक्वल टू पाई एफ इंटू -1⁴L है, ठीक है। यस यस। तो अगर L इक्वल टू ऑन 3 या 5 सब्सिट्यूट करोगे यहाँ पे, तो फिर क्या आ जाएगी वैल्यू? नेगेटिव हो जाएगा ये। नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? पाई आई इक्वल टू -पाई एफ होगी। यस सर। अगर उल्टा करके हम बोले कि पाई आई इक्वल टू पाई एफ आपको दिख रहा है, पैरिटी का चेंज है, तो यस सर। इसके लिए L क्या होगी फिर? 1, 3 एक एंड तो 1। फॉरवर्ड डायरेक्शन और आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर ये केस है, इसके लिए अलाउड वैल्यूज क्या है? L का ऑन 3, 5 एंगुलर मोमेंटम का ये अलाउड वैल्यूज है 1, 3, एंड 5। L का कॉरस्पॉन्डिंग E क्या होगी? E1 होगी। E L डिफाइन किया ना, तो जब L का वैल्यू ऑन है इट विल बी E1। ओके। E L का वैल्यू 2 है, E2, E3, E5, बट सारे L वैल्यूज अलाउड नहीं है यहाँ पे। ऑन अलाउड है, इट विल बी E1, 3 इट विल बी E3, 5 E5। सो जब आपका न्यूक्लियस का पैरिटी का चेंज होती है ना गामा रे में, तो जो इलेक्ट्रिक कॉज है गामा रे का, दैट इज बिकॉज ऑफ डाइपोल ऑसिलेशन, ऑक्टापोल ऑसिलेशन एंड हायर पोल ऑसिलेशन यू कैन डिफाइन, है ना। मोनोपोल नहीं होती है, ठीक है, यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक कॉज है। अब बताओ मैग्नेटिक में क्या कॉज होगी? मैग्नेटिक में क्या कॉज होगी बताओ। सो अगेन आई विल डिफाइन, यू हैव ए पाई आई इक्वल्स टू पाई एफ -1 की पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे? L+1. L+1, ठीक है, L+1, ठीक है ना। अब सपोज मान लो L की वैल्यूज है 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ठीक है, 0 नहीं होती है। L की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑन होती है हमेशा, ठीक है, 0 नहीं होती है। अब बताओ जब L की वैल्यूज इवन है, सारे इवन है, तो क्या फिर क्या हो गया आपका? यहाँ से बताओ, नेगेटिव होता पाई Minus आई क्या हो जाएगी? -5. -5। तो इसका मतलब कहने का पर्पज यही है, जब आपका पाई आई when there is a change in parity of daughter nucleus in the excited and ground state, when there is a change in the parity, then allowed values of L for magnetic multiple expansion that will be 2, 4, 6 and so on. यहाँ पे देखो, जब आपका change in the parity in the electric cause, the allowed values of L is on 3, 5 and so on, odd number, and corresponding electric pole that will be E1, E3, 5. E1 is dipole,
octapole and higher pole. यहाँ पे क्या है, उल्टा है. यहाँ पे क्या आ जाएगी, corresponding magnetic pole क्या आ जाएगी, M2, M4, M6 and so on. So when there is a change in parity, the electric cause is E1, E3, E5 and so on. Magnetic cause is M2, M4, M6 and so on. M2 का मतलब क्या है, M2 का मतलब क्या है, Quadrupole. क्वाड्रुपोल. एग्जैक्टली, ठीक है ना. क्वाड्रपोल, M4 का मतलब हेक्सापोल एंड सो ऑन, ठीक है ना. चलो अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है. So when there is a change in parity, if I summarize, when there is a change in parity, the allowed multiple will be क्या होगी बताओ, E1, M2, E3, M4 and so on. आपको तो दोनों कॉम्बाइन करके लिखना पड़ेगा ना कि क्या कॉजेस है. तो हम क्या लिखेंगे, when there is a change in parity of daughter nucleus from the excited state to ground state, the allowed cause will be E1, that will be electric dipole, then M2 magnetic quadrupole and E3 electric octapole. This oscillation is giving rise to gamma rays. ठीक है. नाउ उल्टा केस क्या है, जब आपका L का वैल्यू इवन है फॉर इलेक्ट्रिक केस 2, 4 and 6 so on. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगी बताओ, Pi F. Pi F. Exactly, it will be pi f. तो इसका कारण इलेक्ट्रिक जो पोल अलाउड होगी क्या होगी, E2 E2, E4. and so on. और यहाँ पे if L equals to क्या है, on 3, 5 and so on, है ना. तो फिर आपका क्या होगी इसमें, पाई आई इक्वल क्या हो जाएगी, पाई Pi. f. तो यहाँ पे अलाउड पोल दैट विल बी M on, M3, M5 and so on. ठीक है ना. जरा ये समझ में आई आप लोगों को व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Is this clear? Let us solve a problem, then we'll stop it. Suppose you have a daughter nucleus is at excited state. इसका जो parity है excited state में 2 है and it's coming to ground state having parity. Spin parity is given, है ना. Daughter nucleus at excited state spin कितना है, 2 है and parity positive है. Is coming to ground state spin कितना है, on है, parity कितना है, positive है. Now we have to tell that electric and magnetic cause क्या क्या है इसमें, बताओ जरा. E2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, जो L वैल्यूज होगी क्या क्या होगी बताओ. सो जस्ट वी हैव डन राइट, JI JF है, तो मॉड ऑफ JI माइनस JF टू JI प्लस JF है. तो JI माइनस JF का वैल्यू कितना हो जाएगी, ऑन, देन 2, then 3. These are the possible L values are allowed here. क्या क्या वैल्यूज अलाउड है, ऑन, 2, 3, राइट. क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ, Yes, sir. okay. Now there is no change in parity. No change in parity कहाँ दिखाया गया है, no change in parity. Parity is same. हाँ, Yes, no sir. change कहाँ पे है, even electric and odd magnetic. Even Electric and odd magnetic. so odd मतलब क्या है, ये आपका M1 हो जाएगी, then 2 corresponds to क्या हो जाएगी, E2. and 3 corresponds to M3. ठीक है ना. So I think we should stop here. There will be a few more problems tomorrow we'll solve and then we'll go to that liquid drop model. Okay then, huh?